Good morning student, welcome back to another video of chapter 3, our changing earth. In previous video we will discuss all above topics. I repeat once again what kind of topic we will discuss in this chapter. Firstly, we will understand about evolution of landform as you see the figure 3.1. The detailed evolution of landform. Earth movement, endogenic forces, it may be exogenic forces. What comes under endogenic and what comes under exogenic forces, okay? And what is lithospheric plate? What is volcano? Volcano is a vent in the earth crust through which molten material erupts suddenly, as we all know. And the origin of an earthquake, as you see the figure 3.2, 3.3. And next we will discuss about discussed earlier major landforms, which is work for a river, work for sea waves. In this video we will discuss about work of ice and work of wind. They are the two topics of major landforms, okay? Work of sea waves and work of ice. So what is work of sea waves? Look at here, figure 3.7. The erosion and deposition of sea wave. Remember that the erosion and deposition of sea wave give rise the coastal landform. Give rise the coastal landform. Sea waves continuously strike at the rock. जो समुद्र की लहरें हैं ये लगातार स्ट्राइक करती हैं रॉक्स के ऊपर. जैसा फिल्मों वगैरह में आपने देखा होगा कि लहरें आती हैं, पत्थर से टकराती हैं और जाती रहती हैं. ये जो सी वेव्स है ये कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स. क्रैक डेवलप, उससे क्या होता है? क्रैक डेवलप होता है. ओवर टाइम दे बिकम लार्जर, समय के साथ साथ ये जो क्रैक्स हैं ये बड़े होते जाते हैं. एंड वाइडर, और चौड़े भी होते हैं. दस हॉलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक, उसमें हल्का हल्का एक सुराख आप ये यहाँ पर देख सकते हैं. सी केव, सी आर्च, ये छोटा छोटा ये स्ट्राइक की वजह से या फिर स्ट्राइक किनारे आप गैप देख सकते हैं फिगर 3.7 में. ये किस तरह से मतलब कंटिन्यूस स्ट्राइक की वजह से जो रॉक के अंदर एक डीप फॉर्मेशंस होने लगता है, एक हॉलो बनने लगता है, एक केव्स जैसा फॉर्मेट होता है. ठीक है. 10 हॉलो लाइक केव आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक, दे आर कॉल्ड सी केव्स. सी केव्स किसको कहते हैं? जो समुद्र के किनारे पत्थर हैं, रॉक्स हैं बड़े बड़े, उसमें जो कंटिन्यूस स्ट्राइक्स है वाटर का, उससे एक होल हो जाता है. होल धीरे धीरे बड़ा होता है टाइम के साथ और वो चौड़ा भी होता है और फिर एक गैप क्रिएट होता है जिसको हम कहते हैं सी केव्स, यानी कि समुद्र की गुफा. दे आर कॉल्ड सी केव्स. एज दिस कैविटीज बिकम्स बिगर एंड बिगर ओनली ऑन द रूफ ऑफ द केव रिमेन्स. सिर्फ उसका रूफ जो होता है, यानी कि जो केव्स मतलब रॉक्स हैं उनका रूफ, बाकी नीचे से वो छेद होना, मतलब जो केव्स है वो बड़ा होने लगता है. केव्स रिमेन दस फॉर्मिंग सी आर्चेज. इससे क्या होता है कि सी आर्च बन जाता है. मतलब ये है कि एक रॉक्स है, उसके नीचे साइड से उसमें एक केव्स बनता जा रहा है तो वो एक आर्च जैसा रूप ले लेता है. जैसा आप देख सकते हैं सी आर्च फिगर 3.7 में. ओके, आपको वीडियो के बाद ये फिगर ड्रॉ भी करनी है, वैसे ज़रूरी नहीं है, आप ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए. तो आप इसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे. सी केव्स क्या होता है इसको याद रखना है. सी आर्चेस क्या है ये देखना है कि जब कंटिन्यूसली स्ट्राइक के बाद जो होल है वो बहुत बड़े हो जाते हैं, इस तरह से वो कटते हैं होल होने के बाद, जैसा आर्च जैसा लगता है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? सी आर्च. फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट. कि इरोजन रूफ को भी काट देते हैं और एक वॉल्स बच जाता है, एक दीवार जैसा. जैसा आप देख सकते हैं साइड में जहाँ पे स्टैक लिखा हुआ है कि किस तरह से वो नीचे से कटते करते ऊपर तक काट देता है और वो एक अलग दीवार जैसा किनारे में हो जाता है. ओनली वॉल्स आर लेफ्ट. दीज वॉल लाइक फीचर आर कॉल्ड स्टैक. ये जो अलग हो जाता है मतलब समुद्र के इरोजन मतलब कंटिन्यूसली स्ट्राइक के बाद ये जो अलग हो जाता है रॉक से, इसको हम क्या कहते हैं? स्टैक्स. ओके. द स्टेप रॉकी कोस्ट rising almost vertically above sea water is called sea cliff. I repeat once again, these wall, ये जो stack है, these wall like feature are called stack. The steep rocky coast rising almost vertically above the sea water, that is called sea cliff. Okay, and the sea waves deposit sediment along the shore from beaches. Now we will discuss about the next topic, work of ice. Work of ice, glaciers and river of work of ice. Glaciers are river of ice. Glaciers मतलब
उसको बोलते हैं जो रिवर ऑफ आइस यानी कि बर्फ की नदी, दैट वी आर कॉल्ड ग्लेशियर्स, विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय bulldozing soil and stone and expose the solid rock below. Glaciers curve out deep hollow there. As the ice melt, they get filled up with water and become beautiful lakes in the mountain. When the ice melt, the material carried by the glaciers, such as rocks, big and small, sand and silt, get deposited. These deposit forms called glacial moraines. Glacial moraines. Now we will discuss the last topic of this chapter, work of wind. Have you ever visited a desert? I hope somebody is visited. Try to collect some pictures and sand dunes. What is sand dune? We will discuss about. An active agent of erosion and deposition. An active agent of erosion and deposition in the desert is wind. In desert, you can see rock in the shape of mushroom. In desert, you can see rocks in the shape of mushroom, commonly called mushroom rock. That's why we are called mushroom, because it look like mushrooms. Wind erode the lower section of the rock more than the upper part. Therefore, such rocks have narrower base and wider top. When the wind blows, it lets the transport sand from one place to another. When it stops blowing, sandfall and get the deposit in low hill. That's why we are call it sand dunes. Like a structure, these are called sand dune. कि इस तरह का जो स्ट्रक्चर बन जाता है कि जब वो एक मतलब हवा चलती है तो वो ऊपर अपर पार्ट्स में चले जाता है दूसरी जगह, और जब वो हवा रुक जाती है तो वापस से वो नीचे की तरफ ढलान की तरफ वो नीचे आ जाता है. तो इस प्रोसेस को, ये जो डिपोजिशंस का फॉर्म है, सैंड फॉल्स होके जो डिपोजिट होते हैं लो हिली एरियाज में, दैट्स व्हाई वी आर कॉल इट्स अ सैंड ड्यून. ओके, दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून. व्हेन द ग्रेन ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट, when the grain of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distances. अगर ये जो विंड का ग्रेन्स है, बालू की जो ग्रेन्स है, वो अगर हल्का होगा और लाइट होगा, फाइन और लाइट होगा, द विंड कैरी, तो हवा उसको बहुत दूर तक उड़ा के ले जा सकती है. When such land is deposited in large area, जो कि लंबे एरियाज की तरफ बढ़ता जाता है, it is called loses. It is called loses. Loess. It is called loess. Large deposit of loess is found in China. ये जो large deposit of loess है, they are found in China. I hope you understand why we are called rock in desert area is called mushroom rock, because it look like mushroom. What is sand dune and what is losses, and where the losses found? Found in China. I hope you enjoyed it. If you have any doubt in this chapter, you will be message me in the comment box or in the group. Okay, in next video we will discuss about the question and answer of in this chapter. Okay, so what will totally teach in this chapter? The first, remember the topic, major landform. Major landform. What kind of landform? Work of river, work of sea wave, work of ice and work of wind. There are 4 type of major landforms. And the previous topic, which is evolution of landform. There are the mainly 2 topic in this chapter, evolution of landform and major landforms. जो major landforms evolutions के, उनके बारे में हमने डिस्कस किया. Okay, I hope you enjoyed it. So if you have any doubt, message me in the comment box. Okay, in next video we will discuss the exercise question answer. I hope you like it. Have a nice day. Goodbye.